Hello students, welcome to Physics Parsala. Today we'll study on kinematics. Kinematics deals with motion of an object in which cause of motion is not included in consideration. हम लोग सब पता है कोई ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ता है, तो हियर फोर्स इज द कॉज ऑफ द मोशन। तो अभी हम फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे। सपोज ऑब्जेक्ट इनिशियली एट ए और आफ्टर सर्टेन टाइम इट हैज रीच्ड एट बी। In this change, it has covered a distance of s। जब हमने कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस है s और इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इन दिस केस दिस डिस्टेंस इज became displacement, that is s और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया s, that is our distance. We know displacement is the distance in a given direction or shortest distance between two positions. This is initial position and this is final position. Right. Then suppose we have initial velocity u and you have final velocity b. Initial velocity is the velocity at its initial point a and v is the final velocity or velocity at position b. Now there is a change in velocity. The change in velocity is v minus u. Then rate of change in velocity became v minus u and time is t. Then v minus u by t is our rate of change in velocity, that is acceleration or a. Suppose objects now move from a and reached at b. ऑब्जेक्ट ने पोजीशन ए से बी तक मूव किया है और इसका दूरी है s, या डिस्टेंस इज s। तो डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये बन गया डिस्प्लेसमेंट। टाइम लगा a, चेंज इन वेलोसिटी is v minus u, rate of change in velocity v minus u by t is our acceleration a. Then cross multiplying v minus u is equal to at or v became u plus at is the first equation of kinematics. Now as it is moving with uniform acceleration, here a is constant, means not changing, means uniform acceleration. For uniform acceleration, the average velocity
is average velocity is u plus v by 2. Now the displacement became s is equal to u plus v by 2 into t. From here we got t is equal to v minus u by a. Replacing value of t here, तो यहाँ t के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा v प्लस यू बाई 2 इंटू v माइनस यू बाई 2 और ऊपर में हो गया v प्लस यू और इंटू v माइनस यू बाई a राइट 2a और इट बिकेम v square minus u square by 2a implies that cross multiplying 2as became v square minus u square or v square is equal to u square plus 2as. This is kinematic equation 2. While expressing this motion in graphical form, जो मोशन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको हम मैथमेटिकल फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं, जैसे एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसको ग्राफिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सपोज वी हैव आवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस आवर इनिशियल वेलोसिटी u and after certain time t velocity became v. Here t is equal to 0, here t is equal to t, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक टाइम इज t। तो t ड्यूरेशन टाइम में जब t0 velocity was u, that is our initial velocity, t became t, velocity became v. So this is final velocity. When t is equal to 0, this is velocity u, t is equal to velocity is v. तो अभी टाइम ड्यूरेशन में वेलोसिटी चेंज हुआ v माइनस u। तो दिस इज द ग्राफ जो हमारा मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन दैट दिस इज द ग्राफ, दिस इज रिप्रेजेंटिंग आवर मोशन। Correct. Now we know for in a rectangle, area is the multiplication of two sides or multiplication of length of two sides. Suppose this L and this is B, area is L into B. If side of in the rectangle is T and it is V, then area will become V into T. In similar manner, here area of this trapezium is area of a rectangle plus area of a triangle. That means area under this curve is, suppose this is O, this is A, this is B and this is C. Area OABC equal to rectangle area, this is suppose T, and OADC and area of triangle is CDB. So area of rectangle is T into U plus area of triangle is half into T into IT is V minus U. तो इस केस में बन गया UT plus half T V minus U. From this equation is our AT, ये बन गया UT plus half AT square. तो एरिया
is here V into T. Is if V is the velocity and this is time, तो area will become displacement. तो ये क्या बन गया? This area is ut plus r a t square. This is our kinetic equation number 3. Now हमारे पास तीन काइनेमेटिक इक्वेशन मिल गया. फर्स्ट वन इज v इक्वल टू u प्लस a t. सेकेंड इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. थर्ड इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. इसमें सपोज a इज इनिशियल पोजीशन, b इज फाइनल पोजीशन. a से शुरू किया ऑब्जेक्ट ने और b में जाके पहुंचा. डिस्प्लेसमेंट s, t is time taken, a is acceleration. तो a is v minus u by t, where v is final position velocity और final velocity, u is initial position velocity or initial velocity. Right? So this is our initial position, this is our final position, this is our initial velocity, this is our final velocity. So that means, and s is our change in position, that is final position minus initial position, and this also is shortest distance from A to B. This is the distance along a particular direction from A towards B. This is our displacement. This is our displacement. That means each object is moving in a straight line motion. Its shortest distance, that distance became displacement, or s is the displacement and s is the distance. This magnitude of displacement is same as distance. So distance is the actual path. Distance is actual path covered by an object. Actual path covered or traveled by an object. Whereas displacement is the shortest distance from initial position to final position. So here A is our initial position and B is our final position. Whereas position says position suppose A and somebody is observing here. This is the observer. तो ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट इज इनिशियल एट ए, देन पोजीशन ऑफ इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट ए. So that means position is a reference term. It indicates location of the object. Location of the object seen by observer or with respect to the observer. And this observer is not moving, standing, that is stationary observer with respect to a stationary observer. जो ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा है तो वो जब देखेगा तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए विल बिकम इनिशियल पोजीशन और कुछ टाइम के बाद पोजीशन ऑब्जेक्ट विल बी एट बी, इट विल बिकम फाइनल पोजीशन. तो वी कैन से ऑब्जर्वर जहाँ खड़ा है उसका हम ओरिजिन लेंगे तो सपोज इट इज O, then OA is position vector of initial position A, and OB is position vector of
फाइनल पोजीशन बी। तो एक ओ ए बन गया पोजीशन वेक्टर और एक बन गया ओ बी। तो ओ बी माइनस ओ ए इज आवर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट ए बी। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कई तरीके से लिख सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन भी लिख सकते हैं। This is final position minus initial position, that is position vector of final position minus position vector of initial position. In this way we can represent this motion using its displacement, its velocity, its acceleration. तो हमें 3 काइनेटिक इक्वेशन मिला है। These 3 kinetic equation will be valid in all situations.